हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपसे पहले हमने बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हैं, स्पेशली पेपर 2 की बात करें तो उन सब का सोल्यूशन हम करेंगे ईयर वाइज ईयर। और एक साल का पेपर जैसे 2018 का पेपर है, इसको हमने फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें 3 पार्ट में 1 से लेकर 3 पार्ट का मैंने वीडियो ऑलरेडी मतलब दे चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम जैसे मेरा मकसद ये है कि एक पेपर का सोल्यूशन हम दे 2 घंटे का, तो 2 घंटे का वीडियो देखना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है और किसी के पास इतना समय भी नहीं होता है। तो आधे आधे घंटे का अगर वीडियो हम बनाते हैं जिसमें सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है सभी मतलब आ जाएंगे जिसका सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग थ्री डायमेंशनल फिगर। ओके, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डज द एबव फिगर हैव। अब हमें ये बताना है कि ये जो फिगर दिख रहा है इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, एक एक अ, ये फिगर है और इसमें क्या है, 5 वर्टिसेस है। कितने वर्टिसेस है? 5 वर्टिसेस है। तो अगर आप इसको देखें और ये ऊपर में टॉप में है, तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ से 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल एंड 5 ट्रायंगल। 5 ट्रायंगल ऊपर है और इस पॉइंट के नीचे भी 5 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, नीचे भी 5 ट्रायंगल होंगे और ऊपर भी 5 ट्रायंगल होंगे। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 10 हो गए। प्लस ये जो नीचे वाला आप फिगर देख रहे हैं वो भी सेम फिगर है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 वर्टिसेस है। तो इस वर्टिसेस के ऊपर भी 5 ट्रायंगल बनेंगे और नीचे भी 5 ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल 10 ट्रायंगल हो गए और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया 20। तो 20 विल बी द राइट आंसर। अगर इस चीज को आप दूसरी तरह से समझना चाहते हैं, दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये जो फिगर है, यहाँ पे सामने कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ट्रायंगल दिख रहा है सामने फ्रंट साइज में। ठीक है, तो अगर सामने फ्रंट में आपका 10 ट्रायंगल दिख रहा है तो बैक साइड में भी आपको 10 ट्रायंगल मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 20। सो अगेन 20 will be the right answer. Clear? Now the next question, this is very important question, very high frequency का ये पैटर्न है। ठीक है, consider the following pattern of numbers. What is the number at question mark in the above pattern? ठीक है, ये जो पैटर्न अभी जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपके साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, तो बहुत सिंपल है और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है। जैसे 8 + 4 कितना हो गया? 8 + 4 12 एंड 12 - 6 कितना हो गया? 6 हो गया। और 10 + 6 16 - 5 11, 15 + 8 23, सॉरी 15 + 8 23, 23 - 7, so 16. Now in the same pattern 13 + 8 21, 21 - 4 17. Okay, 17. So 17 option A will be the right answer. ये very important pattern है, very important pattern, या you can say most important pattern है। ठीक है, now the next question question is the figure drawn below gives the velocity graph of two vehicle A and B. The straight line OKP
the straight line OAP represent the velocity of vehicle A at any instant, whereas the horizontal straight line CKD represent the velocity of vehicle B at any instant. In the figure, D is the point where perpendicular from P meet the horizontal line CKD, horizontal line CKD, okay, such that PD is equal to half LD, PD is equal to half LD, PD is equal to half DL, okay, LD or DL or the same. So we can consider that PD, if we suppose PD is equal to X, then DL will be what? 2X, because here you can say 2PD is equal to LD. LD is equal to twice of PD. LD is equal to twice of PD. Okay. हमें बताना है what is the ratio between the distances covered by vehicle A and vehicle B in the time interval OL. This is the time interval OL. This is the x-axis. This is time, and y-axis. This is the velocity. Okay. So vehicle A, velocity of vehicle A is this, and velocity of vehicle B is this. Okay, and time interval for both the vehicle is OL. Okay. So अगर यहाँ से आप देखें vehicle A की velocity and time, तो आपको पता है कि distance is equal to speed into time. Distance is equal to क्या होता है? Speed into time. तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? अगर इस स्पीड को और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलता है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एल ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एल ओ, ठीक है। इस ट्रायंगल की एरिया के इक्विवेलेंट क्या होगा? डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर हम व्हीकल बी की बात करें, ठीक है, तो ये उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एंड ये टाइम है, और डिस्टेंस कितना कवर होगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल OL DC. Okay, so this is for vehicle A and this is for vehicle B. So we have to find out ratio of area, sorry, ratio of distance. So ratio of distance of A ratio of distance is equal to B will be area of triangle PLO, area of triangle PLO. This is a right angle triangle, and area of right angle triangle will be half into base into height, and half into base base is OL into height is 2x plus x 3x, okay, is to area of OL rectangle OLDC. Area of rectangle is equal to base into length into breadth. Okay, so length is OL and breadth is 2x, 2 into x. Okay, so here you can see here that OL will be cancel out OL because this is in ratio, and x will be cancelled out from x, and here will be 3 by 2 is to 2, and the new ratio will be 3 is to 4, 3 is to 4. So option C will be the right answer. This is the distance, the ratio of distance of vehicle A and vehicle B. Clear? Now the next question is, now the question is,
Direction for the following three items. The following three items are based on the graph given below, which shows import of three different type of steel over period of 6 months of a year. Study the graph and answer the three items that follows. Okay, by how much measured in thousand of ton did the import of sheet steel exceed the import of coil steel in the first 3 months of the year? Now, this is the figure, this is the graph given, and y-axis represent thousand of tons of imported material, coil, sheet, and scrap steel. And the figure in the bracket indicate the average cost per ton over 6 months. Average cost per ton over 6 months. While this represent the coil, blank graph represent the coil, and line this represent the sheet, and this represent the scrap. Okay. Now, uh, how much by how much measured in thousand ton did the import of sheet steel? Sheet steel is this exceed the import of coil steel in the first 3 months. First three means January, February, and March. Okay, so sheet steel here number will be 40, and in February number is between 36 and 38, so 37. Okay, now, and this is the 36. Okay, so total import of is steel, sheet steel is sheet steel. Total import of sheet steel sheet steel sheet steel is 40 plus 37 plus 36. This is equal to 113. And coil steel represented by this. So coil steel is CTC, and coil steel is here. You can say 30, and here 31, and this will be 32, 30, 33. This is equivalent to 33. Okay, so coil steel is how much? uh 30 plus 31 plus 33, so total number will be 4, 339, 94. Then what is the difference between these two? 113 minus 94 will be equivalent to 919. So option C will be the right answer. Very simple question, but based on the data. Okay, now the next question is what is the next question is what is the approximate total value in dollar of sheet steel imported over the 6 month period? शीट स्टील की बात कर रहा है, शीट स्टील imported over the 6 month period. So sheet steel, this is 40, and this is 37. You have already done it. This is 36. This is also 36, and for this you can see here 34. This is also similar to this, will be 34. So total sheet imported will be equal to 40 plus 37 plus 36 plus 36 plus 34 plus 34.
So it will be 448, 8 plus 6, 14, 14 plus 6, 20, and 27, 7, okay. 2, 3, 3, 6 plus 3, 9, 9 and 6, 15, 15 plus 4, 19, 19 plus 2, 21, 120, 100, 217, 217,000 tons. Okay, now we have to find out what is the approximate total value. We have to find out in dollar form. Okay, so here price or here the figure in the bracket indicate the average cost of average cost. So average cost per ton. So here 217,000 ton. 217,000 ton have been imported. So total value will be what? 217 into 256. If you multiply here, so if you multiply here 217 and 256, then you will get how much? 5555 and okay. And this value is not given in any option. So what we have to find out? We have to find out approximate value. Okay, approximate value. So what will be the approximate value of this? This is 5 5 5 5 and 0. So option C will be the right answer. Done. Now next question is, what was the approximate ratio of sheet steel and scrap steel imported in the first 3 months? Okay, first 3 months sheet steel imported was 40, 37 and 36 in the first 3 months, and this was total value of 113. We have already done it. 113. Okay, now now total scrap in the first 3 months. Total scrap, here scrap is 32 and this will be to 34, and this will be equivalent to 32. So 32 plus 34 plus 32, to 8 is scrap 8 and 998. Then we have to find out approximate ratio. अगर फाइंड आउट करते हैं तो 113 डिवाइडेड बाई विल बिकम 98. तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, 98 है, इसको हम 100 कर लेते हैं. ठीक है, अब 113 है, इसको 115 कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर क्या हो सकता है, 1.15 डिवाइडेड बाई 1 होगा. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.2 डिवाइडेड बाई 1. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1.2 रेशियो 1. So this will be the answer. So option B will be the right answer. Okay, option B will be the right answer. 1.2 is to 1. Clear? Now next question. Consider the following graph.
which one of the following statement is not correct with reference to the graph given above? Which one of the following statement is not correct? हमें जो गलत है वो बताना है. On the 1st June, first option is on the 1st June, the actual progress of the work was less than the expected progress. And this is the this line represent the actual progress, and this dotted line represent the expected progress. A question is talking about 1st June. 1st June means on this date. Okay, 1st June. On 1st June, the actual progress was less than the expected progress. Less than the expected progress. तो ये क्या है? ये सही है, स्टेटमेंट सही है, हमें जो गलत है उसे बताना है. The next option है B. The actual rate of progress of work was greatest during the month of August. Month of August, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो समय है, पीरियड है, वो अगस्त मंथ का है. तो इसमें कहा जा रहा है कि एक्चुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द वर्क वाज ग्रेटेस्ट ड्यूरिंग द month of August. So this is the actual progress, and obviously it is greatest in the month of August than the expected progress. So this is also a correct statement. Now the work was actually completed before the expected time. This was the expected time on 1st of September, but work was completed before that, earlier. So this is also a correct statement. So we are left with only one option, that is option D, and this will be the wrong. So the wrong statement is our answer. So option D will be the right answer. Okay. Now the next question. Direction for the following two items. Consider the following graph in which the birth rate and death rate of a country are given, and answer the two items that follow. First question, looking at the graph, it can be inferred that from 1990 to 2010, from 1990 to 2010, from 1990 to 2010 की बात किया जा रहा है. The population growth rate has increased. The population growth rate has increased. Population growth rate has increased. This line indicate the birth rate, and this line indicate the dotted line indicate the death rate. Okay. So from 1990 to 2010, statement is population growth rate has increased. Birth rate is also decreasing and death rate is also decreasing. तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे इंक्रीज हो जाएगा? तो this is also not true. The graph is not showing this trend. Okay, that population growth rate has increased. Okay, population growth rate has decreased. Population growth rate has decreased within this period. Now from here to here, this is the birth rate and this is the death rate. So this graph is not indicating that population growth rate has decreased. Okay, population growth rate has decreased. This information is not represented by this graph, so this is also not correct. Now option C, growth rate of the population has remained stable. This is also not seems from the figure that growth rate of population has remained stable. Stable नहीं है, ये भी नहीं शो कर रहा है. Population growth rate shows no trend. This will be the correct answer, because there is this graph is not showing any kind of trend whether population growth rate is increasing
or population growth rate is decreasing, or population growth rate is stagnant. Okay, so here option D will be the right answer. Okay, now the next question with reference to the above graph, consider the following statement considering 1970 as the base year. 1970 as a base year. Okay, now first point is population has stabilized after 35 years. After 35, population has stabilized after 35 years. After 35 years means this is 10 year, and this is also 10 year, and this is also 10 year. So 10 plus 10 plus 10, 30, and here 35. From here to here, from this point to this point, population growth rate, population has stabilized after 35. Now this x-axis represent in number of years, and y-axis represent birth and death rates per thousand. Okay, but actual number is not known, so we cannot say that the population has stabilized after 35 years. Okay, so first statement is not correct. Second, population growth rate has stabilized after 30. Population growth rate has stabilized after 35 years. Population growth rate has stabilized after 30. From here, this is a straight line, and from here, this is a straight line. It means population growth rate has stabilized. Okay, so this is the correct statement. Now, death rate has fallen by 10% in the first 10 years. First 10 year means from 1970 to 1980. This is the population death rate. This is the this line represent the death rate, and here this point is 25. Okay, this is almost 21. 21. This is almost 21. Okay, so this is 21 point. Now अगर 10% डिक्रीजमेंट की बात कर रहा है तो 25 से 10%, 25 का 10% कितना होगा 2.5 होता है, और माइनस करेंगे तो 22.5 होगा. इट मीन्स दिस पॉइंट मस्ट बी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसके बिलो है. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो थर्ड, जहाँ जहाँ थर्ड होगा and first statement is wrong, and third statement is wrong. So first is wrong means option A will be wrong, and B also will be wrong, and third is also wrong, so option C will be the still will be also not correct option. So we are left with only option D, and option D is the 2 and 4th. So option D will be the right answer. Fourth option is birth rate has stabilized after 35 years. This is the birth rate, and it has been stabilized because this is the state line. It means birth rate has stabilized. So option 4 will be the correct statement. So our answer will be option D. Second and fourth is the correct statement. One means most logical and rational statement. Okay. now the next question is an average hourly earning per year of the workers in a firm are represented in the figure A and B as follows. This is figure A and this is figure B. From the figure, it is observed that the value of E are different. Value of E, this represent value of E, and this also represent this is the graph, and sorry, this represent the value of E. Okay, this represent the value of E. This represent hourly income per year,
and this also represent value of hourly income earning. Okay, the value of E are different. Value of E are different. So in the first figure, value of E are 20, 25, 30, 35, and 40. And here value of E are 20, 25, 30, 35, and 40. So first is a wrong statement. We cannot observe this. Now option C, range. The difference between the maximum and minimum of E are different. Maximum and minimum of E are different. Figure A and figure B. Now this is also same, not different. So this is the correct statement. Slope of the graph are same. जी, स्लोप मीन्स झुकाव. ये जो झुकाव है यहाँ से स्लोप को आप दूसरे एंगल से समझ सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेम. ओके, दिस एंगल इज सेम फॉर बोथ द फिगर्स. This angle is same. Theta will be equal to this value of this theta and value of this theta are equal. So angle is the known as slope in simple term. So slope also same. So option C will be the right answer. Okay. Now the next question. Consider the following figure A and B. The manufacturing cost and projected sale for the product are shown in the above figure A and B respectively. What is the minimum number of pieces that should be manufactured to avoid a loss? This is figure A and this is figure B. Number of pieces manufactured and cost of production in lakh rupees. This is the number of pieces. अगर 1000 पीस का प्रोडक्शन होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल कॉस्ट होगा 6 लाख. 6 लाख हो रहा है. अगर 2000 का प्रोडक्शन हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 7 लाख. अगर 3000 पीस का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये 8 लाख हो जाए. ओके, ये प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स. ठीक है. अब यहाँ पे सेल की बात करें तो अगर 1000 अगर आप सेल कर रहे हैं तो इनकम कितना हो रहा है, 400 पर पीस के हिसाब से अगर सेल कर रहे हैं तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा. ठीक है, 4 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 लाख हो जाएगा. अब अगर 2000 पीस अगर सेल हो रहा है तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, दिस मच रेवेन्यू मीन्स 350 इंटू 2000 मीन्स 7 लाख. 7 लाख हो जाए, यहाँ पे 7 लाख हो रहा है. रेवेन्यू जनरेट कितना हो रहा है, 7 लाख. अगर 3000 का प्रोडक्शन हो रहा है, 3000 क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हो रहा है तो कितना इनकम जनरेट हो रहा है, यहाँ पे 9 लाख हो रहा है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या करा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू अवॉइड लॉस. अवॉइड लॉस का मतलब प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो. तो मतलब जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उतना ही और सेल से रेवेन्यू भी मिलना चाहिए. तो कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो 2000 क्वांटिटी, 2000. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 2000 प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, 7 लाख हो रहा है. और 2000 क्वांटिटी अगर सेल हो रहा है तो कितना रेवेन्यू मिल रहा है, 7 लाख. इट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, consider the following graph. The curve in the graph indicate different age group in the population of two countries A and B over the period of few decades. Okay. So with reference to the above graph, which of the following are
the most logical and rational inferences that can be made, most logical and rational inferences. फर्स्ट इन्फरेंस इज ओवर द, अब वाले फिगर को देख लेते हैं. दिस रिप्रेजेंट लेस देन 15 ईयर एज ग्रुप, लेस मोर देन 15. this represent less than 15, and this represent this dotted line represent between 15 to 64, and this line represent age over 64 प्लस. ठीक है. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 15 to 64 में ये वर्किंग ग्रुप में हो जाते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है. और ये 64 प्लस मतलब बुजुर्ग लोगों के, सीनियर सिटीजन, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. और ये लेस देन 15 मीन्स ये जो बच्चे हैं वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी है, ये कंट्री ए के लिए है और ये कंट्री बी के लिए है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ओवर द लास्ट 2.5 डिकेड, ओवर द लास्ट 2.5 डिकेड मीन्स 2025 to 2050, last 2.5 decade, the dependency ratio for country B has decreased. The dependency ratio for country B has decreased. For country B, dependency ratio has decreased. Dependency ratio, यहाँ पे dependency ratio मतलब number of dependent persons have decreased. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेस देन 15 ईयर का कर्व क्या है, घट रहा है. एंड 64 प्लस का जो कर्व है वो स्लोली क्या है, बढ़ रहा है. लेकिन लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है. वर्किंग पॉपुलेशन लास्ट में तेजी से बढ़ा है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ा है. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है क्या है, घटा है. यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओवर द लास्ट 2.5 decade the dependency ratio of the country B has decreased. Okay, so this statement is correct. Okay, now by the end of next 2.5 decade the dependency ratio of country A will be much less than that of country B. Now we cannot say that from the figure. From the figure it is clear that the dependent population, senior citizens are increasing. Okay, senior citizens are increasing and less than 15 year is decreasing. Along with that, number of working population, working people are also decreasing. This is decreasing. So working dependency ratio is increasing in the first in the country A, but statement is saying that dependency ratio will in half decade, the dependency ratio of A will be much less than that of country B. तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है और डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. लेकिन यहाँ पे डिक्रीज की बात कर रहा है. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, so we are left with only one option, that is option C. Option C will be the right answer. Okay, option C will be the right answer. Now the next question. Now question is, the graph given below indicate the changes in the key policy rate made by the central bank several time in a year. Okay, which one of the following can be the most likely reason for the central bank for such an action? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो CRR की है, कैश रिजर्व रेशियो. और ये जो लाइन इंडिकेट कर रहा है वो रिवर्स रेपो रेट है. और ये जो लाइन रिपोर्ट कर रहा है वो रेपो रेट है.
और यहाँ पे आप रेपो रेट क्या है, बढ़ रहा है, और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि जो अगर अपने कंट्री की बात करें तो आरबीआई जो है ये इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है, किस केस में यूज करता है, आप जनरल सी आइडिया है किस केस में यूज करता है, कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को वो टाइम टू टाइम चेंज करता है, घटाता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांसेस, तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज direction for the following two items. The following table gives GDP growth rate, daily data of different states of a country in a particular year. Study the table and answer the two items that follows. Now, with reference to the above table, which of the following is are the most logical and rational inferences that can be made? First point is higher per capita income. Higher capita income. Higher per capita income is generally associated with the higher daily density. Now, higher per capita income. Higher per capita income. This is per capita income. Higher per capita income. This is also higher per capita income. This is higher per capita income. This is also higher per capita income. Okay. Question is, higher per capita income is generally associated with higher tele density. Now, tele density, this is a tele density, and this is also a tele density. This is tele density. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जनरली, मतलब कभी अधिक भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली की बात कर रहा है कि हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड, मतलब हायर पर कैपिटा इनकम होगा तो हायर टेली डेंसिटी भी होगी, ठीक है। तो ये जनरली की बोला है, मतलब सामान्यतः कभी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ऑन दिस ग्राउंड, ऑन दिस यूजिंग विथ रेफरेंस ऑफ दिस वर्ड जनरली, this is the correct statement. Okay, now second statement, higher GDP growth rate is always ensures higher per capita income. Higher GDP growth rate is always ensure higher per capita income. Now higher GDP growth rate, this is GDP growth rate, this is higher GDP, this is also GDP. Higher GDP growth rate ensure higher per capita income. Okay, now GDP growth rate here is 11 point something, and per capita income is this much higher. Now GDP growth rate is 10.8, per capita income is 891. Now here GDP growth rate is 10.83, but per capita income is 254. तो यहाँ पे always जो वर्ड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, that's why this statement is wrong on the basis of the given information. Okay, so second is wrong, means option B will be the wrong. Okay, and the third option, the higher GDP growth rate doesn't necessarily ensure higher daily density. Higher GDP growth rate doesn't necessarily ensure higher daily density. Okay, highest GDP growth rate is 11.69, and here daily density is 77.5. Now here GDP growth rate is 8.88, but highest daily density is there. So this is on the basis of given data, this statement is correct. So option statement first and third is correct. So option C will be the right answer. So option C will be the right answer. Clear? Now the next question. With reference to the above table, the following assumption that can be made. Following assumption have been made. Now the first assumption. Nowadays, prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making further large statement in the
of infrastructure. This thing is not mentioned in the given data, so this is the this assumption cannot be made on the basis of the given information. Now, second, nowadays a very high teledensity is most essential condition for promoting business and economic growth. It means higher teledensity and higher will be the economic growth, means GDP growth. Higher teledensity and higher GDP growth. Okay, now these points are contrasting to each other. Here, higher teledensity is higher, but GDP growth is less. Here, teledensity is lower, but GDP growth is higher. So this statement is not conforming the given data. So this is also not. This assumption cannot be made on the basis of given data. So neither first nor second follows. Okay. So that's all. We have done all the questions. Okay. So we have done question CSAT paper second 2018. We have done all the questions related to CSAT paper 2 2018. So now you can prepare yourself on the basis of what you have learned. ठीक है, और जो भी सी सेट इतना टफ नहीं होता है, सी सेट का पेपर है, एक एवरेज स्टूडेंट आसानी से चीज़ों को कर सकता है, लेकिन पता नहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको सी सेट से बहुत डर लगता है। ठीक है, वैसे भी 2018 का जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा लिटिल बिट काफ़ी डिफिकल्ट था, अदर देन अदर ईयर्स पेपर। तो ये तो होता है, कभी पेपर टफ कभी आसान, ये तो चलता रहता है। तो thanks for today. We are meeting again in next video. Till that, thank you so much. And if whatever information I have provided you is beneficial for you, and you think that it is a best way of explaining the thing, then please do subscribe my channel. Thank you so much.